welcome back to my channel and welcome to another day and another episode of this Divalog series. And in this video I'm going to be sharing with you my favorite nude lipsticks, as I love to wear nude lipstick because mostly I wear nude lipstick in my day-to-day life, and I have quite a good collection of nude lipsticks which I really love. And out of those lipsticks I have 7 to 8 lipsticks which I really love and which I love to wear usually. So I'll be sharing with you these top nude lipsticks which I love the most. So please keep on watching this video till end. But obviously before going further, do not forget to subscribe to my channel if you're new here, and also hit that bell so that you will get notifications for all of my videos. So let's get started. First of all guys, I really love this particular lipstick. This is from Pose and this is by My Glam. I really love this particular one, and the shade name is Nude Mauve and the shade number is 008. I really love this lipstick because this is very lightweight and it has a little bit of pinky tone in it as well. I used to wear it every day when I go to office. So abhi to currently I'm not going to office. This is the lipstick which I used to wear at that time, and this is my go-to lipstick. And look at this. This is how it looks like. It has pinky tones in it. I really love these kind of nude lipstick, and you can see ये बहुत बड़ी bullet होती है, and I have used this much because I really love this lipstick. So this is how it looks like. I hope you can see on camera, and I really love it. It has those pinky tones in it which I really love, and this is not transfer proof obviously, but this shade will look really great on medium to dusky skin tone, which is really great. And this one retails for 599 rupees, और ये आपको My Glam पे बड़े अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगी, और मैं अपना रेफर कोड भी आपको शेयर कर दूंगी My Glam की वेबसाइट का. So अगर आप उनकी ऐप पर रजिस्टर कर रहे हैं, आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं and you will get some discount as well. So second lipstick, this is not, you can say, pure nude lipstick. This is a bit on the side of browns. So this is Nykaa's lipstick and this is in the shade These Are Nude, and this is how it looks like. इनके पैकेजिंग जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, स्लीक, और जो भी आपको अंदर प्रोडक्ट होता है उसी तरह कलर की पैकेजिंग मिलती है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो आई विल बी शेयरिंग विद यू द swatch of it, and it looks really nice. This is a bit dark. It will look really good on fair to medium skin tone, and this is how it looks like. I hope you can see clearly. So yes, I know कि ये shade ज़्यादा nude वाली side पे नहीं है. This is in the browns category obviously, but I'm just counted in because I really love this shade and I love to wear it. It will not wash you out if you have medium or fair skin tone, but if you have dusky skin tone, it might wash you out a little bit. So this is the second lipstick, and this is affordable too actually, I think. So third one is this. This is from My Glam Lit Liquid Lipstick, and the shade is too good. It will look really great if you have medium skin tone guys, and look at this. It has a bit of chocolate brown color. So you can see this is how it looks like. Also मेरी skin tone के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैच कर रहा था, and I totally love it. And also इस पे भी ऑफर चलती रहती है. You can check on their website as well. And मैंने भी ध्यान दिया अपने जो ये ब्राउन और न्यूड लिपस्टिक का कलेक्शन है. सो इसमें 3 से 4 प्रोडक्ट हैं जो My Glam के हैं. सो आई थिंक My Glam ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है मुझे इन द केस ऑफ दिस ब्राउन एंड न्यूड लिपस्टिक कलेक्शन. So the next one is again from My Glam. This is again their liquid lipstick. This is a duo. Actually it has the duo of this kind of two, but it has this particular nude sort of shade. This is a nude shade with the hint of orange in it, and oh my god, I totally love it. First of all, look at the packaging. It's so nice, travel friendly and sleek, and look at the wand. It will glide on your lips very smoothly, and ये थोड़ा बहुत ड्राई करता है आपके लिप्स को, बट अदरवाइज इट्स really good. And I will share you the color, and look at this. This is so gorgeous. I totally love the shade, and it looks really good if you have medium skin tone like me, and थोड़ी सी dark skin tone भी है, then it will look really good. So I totally love this particular shade, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपके लिप्स पे ग्लाइड कर जाता है, विच आई टोटली लव. एंड नेक्स्ट वन इज दिस.
This is, I think, my personal favorite, one of my personal favorite. This is from L'Oreal Paris. So this is in the shade I Explore, which I really love. I will share with you its shade as well, and look at the wand. I really love it. इसका जो texture है वो आपके लिप्स पे बिल्कुल भी heavy नहीं लगता, which I really love. And look at this. This is so gorgeous. It has not too thick nor too thin texture, and you're supposed to just wear it and just leave it. You won't feel like कि आपने कुछ wear भी किया अपने lips पे. This is the main you can say advantage or pros of this particular lipstick, which I really love. This is a bit costly, but trust me, this is totally worth it. I have there another shade in the pink, fuchsia pink sort of shade, which is I represent, and that one is good too. So next one is, oh my god, this is my personal favorite, and you can say this is the number one shade or lipstick which I totally love, and I think used every bit of it. थोड़ी बहुत बची होगी इसमें, मैंने इसे काफ़ी यूज़ कर लिया है. And look at its हालत. This is Blue Heaven's Elegance Matte Liquid Lipstick, and this is in the shade number 11. It has really nice pink tones in it. So ये nude shade is my personal favorite. Actually I'm wearing this shade right now on my lips, and it looks so gorgeous. मैं इसे रोज़ पहन सकती हूँ without any hesitation, and it will not dry out your lips. एंड ऑल्सो ये काफ़ी देर तक स्टे भी करता है आपके लिप्स पे. ये है मात्र आई थिंक 105 रुपीज़ का, विच इज़ इनसेन, और ये आपको 90 to 100 रुपीज़ में भी इजीली मिल जाएंगे सेल पे. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट न्यूड शेड गाइज, देन यू मस्ट गो फॉर इट. मैं आपको इसका स्वॉच भी, हैंड स्वॉच शो कर देती हूँ. वैसे तो मैंने अपने लिप्स पे से वेयर किया भी हुआ है. एंड लुक एट दिस, दैट पिंक टोन्स जो भी इसमें है, that looks so good, and मुझे ये particular shade बहुत ज़्यादा पसंद है. Next one, this is actually a lip pencil, not a lipstick. So this one is from PAC, and this is in the shade Mauve, which I really love. कितना ज़्यादा beautiful shade है. This is how this shade looks like, and ये बहुत ज़्यादा beautiful है. I really love it. ये भी काफ़ी ज़्यादा similar है that Blue Heaven का जो shade है उससे. एंड ये आप अगर अकेले भी अपने लिप्स पे वेयर करोगे देन इट विल लुक रियली ग्रेट. आई थिंक मैंने अपने वीडियोज़ में पहले भी शेयर किया होगा. आई रियली लव दिस पर्टिकुलर शेड, और ये आपको सिर्फ 100 रुपीज़ की मिल जाती है. आई थिंक 100 या 200 रुपीज़ की है. आई थिंक सबके पास इस तरह का लिप लाइनर होना ही चाहिए, बिकॉज द शेड इज़ सो गॉर्जियस, एंड ये किसी भी लिपस्टिक के साथ अच्छे से जाएगा अगर आप कोई भी न्यूड या ब्राउन शेड वेयर कर रहे हो स्पेशली. सो नेक्स्ट वन, जो कि इस लिप लाइनर के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, एंड करेंटली जो मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है, दिस इज़ फ्रॉम मेबेलिन कलर सेंसेशनल की जो क्रीमी मैट लिपस्टिक होती है उसमें से. एंड दिस इज़ इन द शेड जो यू कैन से कल्ट फेवरेट शेड. दिस इज़ इन द शेड न्यूड नुएंस, एंड लुक एट दिस. ऑब्वियसली यू नो कि किस तरह से लगता है. पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मैं आपको उसका स्वॉच भी शो कर देती हूँ. वेरी सिमिलर टू जो पैक का लिप लाइनर है और जो ब्लू हेवन की लिपस्टिक है, हल्का सा डिफरेंस है, बट look at this, the shade is so gorgeous and beautiful, and ये आपकी मीडियम स्किन टोन, फेयर डस्की स्किन टोन के साथ बहुत अच्छे से जाएगा. दिस पर्टिकुलर शेड इज़ माई पर्सनल फेवरेट, एंड मैं इसे रोज़ लगा सकती हूँ बिकॉज इट sits on my lips perfectly, and it looked great on me as well. So guys, that's all about my favorite nude lipstick. It has 1 or 2 browns in it, but I think it's okay. Just count these kind of browns in the nude category because nude और brown just मैं mix करके रखती हूँ, and I totally love these shade guys. Hope you guys enjoyed this video because I've been thinking of filming this video from a very long time, so finally मैंने film कर ली. एंड डू हिट दैट लाइक बटन गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है, एंड ऑल्सो शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. मैं आपसे जल्दी मिलूंगी अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.